Dear students, concept of being updated in international affairs. Now, India, as you realize, is a subcontinent which is surrounded by so many countries, sub-part of Indian subcontinent, which have always been continuously at war. We have been enjoying good relations, but other countries have tried to disturb the relations. If you remember, King Biren Singh, when he was there in Nepal, we had a wonderful relation. No visa, direct entry, taking in people from Nepal into the armed forces. But then other countries like China and all influenced King Gyanendra and there was a lot of chaos. It is believed so. I am no one to verify that, but I can understand that this is believed so. Then we had a issue in Bhutan also. The China tried to create problem in Bhutan, and if India would have not stood by Bhutan, then automatically then China would have been there also. We already have a problem with Bangladesh. We helped Bangladesh, but today the conditions are totally different. Bangladesh is having a Muslim majority which is trying to create problem and also disconnect the Seven Sisters, a very serious problem. Even countries like America, China, everybody is trying to disturb the system. We also have a theory of a country coming up, Singam, in the sense that which is near Bangladesh area, where there is a concept of creating, utilizing the Christian population there and create a country, a small country for geopolitical reasons. That has been a problem now. Then we also have found that even Sri Lanka also was disturbed by Chinese investments. Then of course we already have a lovely relationship with Pakistan, which is already creating problem every now and then. So India is troubled with different countries all across. So if we are not aware of international affairs, we will never be able to be a good armed forces officer, because we will not understand the intricacies. We will not understand the intricacies and will not be able to solve that. And once we are not able to understand the intricacies, we will automatically land up into different confusions. So as an armed forces officer, you are supposed to know all about international affairs, the different organizations, the different understandings. ये बात मैं हिंदी में भी कहना चाहूँगा कि हमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बारे में सब कुछ सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे पड़ोसी भी आते हैं और अन्य देशों का भी उसमें रोल है. आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी से हम अच्छे संबंध चला सकते हैं, पर अन्य देश, प्रभावशाली देश, विकसित देश समय समय पे उनको भटकाव करते रहते हैं. ये बड़े दुख की बात. कई बड़े देशों का तो इतिहास ही है. अमेरिका चाहे ना चाहे पर उसका एक लंबा इतिहास है. जिसके साथ उसने दोस्ती की वो तो गया, जिसके साथ दुश्मनी की वो डेंजर में पड़ गया, और जिसके साथ दोस्ती की वो गया. और हमारे पास उदाहरण है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का, हमारे पास उदाहरण है इराक का, उदाहरण है ईरान का, उदाहरण है कई कंट्रीज का. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली opportunism does not help, but in America has a policy of opportunism. Unfortunately, they go into a different style, and this may sound good, but on the long run it is disturbing. खैर anyway, but having knowledge about international affairs, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बारे में अगर आपकी जानकारी नहीं होगी, तो आपकी समझ नहीं होगी, तो आप एक अच्छे आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स नहीं बनेंगे. आपके सिपाही अक्सर आपसे सवाल पूछा करेंगे कि ये लोग हमसे क्यों लड़ते हैं, क्या करते हैं, तो आपके पास जवाब नहीं होगा. प्लस यू ऑल्सो वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड दस यू वॉन्ट गेट प्रॉपरली मोटिवेटेड टू अंडरस्टैंड एंड मोटिवेटेड टू वर्क. The knowledge of international affairs is going to not only make you a good expert, but will also make you understand how to look pragmatically. अभी आप इमोशंस से, अभी आप बच्चे हैं, आप लोग इमोशंस देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पे चलते हैं. बाद में आप प्रैक्टिकल इमोशंस पे चलेंगे. प्रैक्टिकल माने आप प्रैक्टिकलिटी समझेंगे कि कई देशों में ईर्ष्या भाव
द्वेष भाव, आपस में विवाद, आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन is a बहुत common. So then you will understand the pragmatic aspect, that means the practical aspects, then you will do better. So you will understand what is the importance of creating Quad, you will understand what is the importance of creating ASEAN, what is the importance of creating BRICS, what is the importance of creating NAM, what is the importance of holding G20 summit, what is the importance of other aspects, you will understand that. And this is very important for you. Having good knowledge makes you an expert. Remember, many a times the expert of that field, having knowledge automatically becomes the leader. तो इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल अफेयर के बारे में जानकारी अत्यंत आवश्यक है. You should develop this reading. God has blessed you, Google's help, God has blessed you, ChatGPT, AI, so many things where you can update yourself and become better. Having pointers in your fingertips will be much easier than learning or mugging up an essay. Don't do that. ऐसे को मगअप मत करिए, रटिए मत, बल्कि पॉइंटर्स में तब्दील करके समझिए. And once you have that snappy, it will help you where? In group discussions. It will help you where? In lecture. It will help you where? In interview, when they will ask you, because they would also like somebody who is aware. Nobody likes to keep a well in the frog in their house. एक कुएं का मंडूक को कोई भी रखना नहीं चाहता. क्यों? क्योंकि जब तक कुएं का मंडूक दुनिया के हिसाब से अपने आप को बदलेगा नहीं, तो वो दूसरों के लिए बोझ बन जाएगा. It will become a burden. That is why we always talk in the present time to evolve ourselves to new technology. हर व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई अल्फा हो, कोई बीटा हो, चार्ली हो, डेल्टा हो, गामा हो, कोई भी व्यक्ति बैठे हो, सब लोग के लिए जरूरी है कि समय के अनुसार अपने को परिवर्तन करें, नई चुनौतियों को सजग होके स्वीकार करें, उसके लिए तैयार हो. अगर वो सिर्फ एक छोटे से कुएं में बैठ गए और अपने को उसी में ढाल लेते हैं, तो आगे चल के उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा. Don't forget the example of a bird, dodo. There was a bird, dodo, which was very less moving, very huge, but used to only sit in one place and eat, and finally it became extinct. Now it became, initially it was rare and then it became extinct. So anyone who does not evolve themselves. अब human beings को ही आप देख लें, if you look at the human beings, they initially were a different sort of monkeys, right? Then they became a chimpanzee kind of thing, then they transformed to Java man, then human being, Homo sapiens. So evolution is the key. But for evolution, sensitivity to knowledge, sensitivity to experience, and observation power and learning power is important. तो अगर आप नॉलेज ही नहीं रखते, सेंसिटिव नहीं है कि इंटरनेशनल के बारे में मालूम हो, तो दैट इज अ प्रॉब्लम. सो प्लीज डू दिस. Please study 100 odd international affairs. Make a small pointers. I remember many sports persons coming to me. कई ऐसे खिलाड़ी वर्ग मेरे यहाँ आए जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं होता लगता था. They used to never study. There are many people, particularly NCC cadets, other ranks, they do not have that stability of sitting and studying. कई लोगों को आदत नहीं होती, तो आदत में वो कर भी नहीं पाते. NCC वालों के साथ भी यही शिकायत है. तो एनसीसी वाले हों, अदर रैंक्स वाले हो, पढ़ते नहीं है लग के, तो जानकारी का अभाव रहता है. सो डू दैट. इफ यू हैव डन इट, देन ऑटोमेटिकली यू कम आउट द शाइनिंग पर्सन ऑफ द ग्रुप. बट नॉलेज होना और नॉलेज को हैंडल करना दो अलग अलग बात. सो इफ यू हैव गुड नॉलेज, पोलाइटली टेल योर नॉलेज. डोंट ट्राई टू डिस्प्ले इट एज न्यू रिच. जैसे नए लोग जो पैसा कमाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहला काम करते हैं, गोल्ड चेन पहनेंगे, बड़ा मोबाइल ले लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, अजीब तरीके से वॉक करेंगे, अजीब तरीके से बिहेव करेंगे, दिखेगा कि पैसा नया नया है. इसी तरीके से अगर जानकारी है आप में, वो भी आपके लिए दौलत है, तो उसको आराम से प्रस्तुत करिए. दूसरे को तिरस्कार मत करिए, उसका सदुपयोग करिए. जब लेक्चर दें तो अच्छा दीजिए,
बट जीडी में अपनी नॉलेज के आधार पे दूसरे का तिरस्कार मत करिए, मिलजुल करके सामंजस्य बनाइए. Whenever you are participating in GD, if you have good knowledge, utilize it. Be polite. Use it as wealth and enjoy getting this. So this is also for international affairs because you may get it. Hope you've understood this concept. Hope you've understood an insight into it. God bless you. Thank you very much. Jai Hind.